Mr. Gimre, there are two questions I have straight away. One, is there an overlap between is there an overlap between Hindutva and monarchy? And do you think that there can still be some sort of a cultural role for the monarch, whereas the expectations of the people is that, or his, that there should be a governing role? Two questions to you, Mr. Gimre. Well, this issue was never debated when monarchy was removed in 2008, but was put under suspension 2 years before that, immediately after the 2005 political change. So, but what is, what is coming, what you was witnessing now is people are not happy with the performance of political parties which have been ruling the country for the past 18 years. And there are a series of corruption cases against top leaders. Almost every top leader, almost every former prime minister, half a dozen of them, heading different political parties. And there is a sense of anarchy, lawlessness in the country, and even judiciary has lost its credibility. So people are fed up, and although this movement began with some other demands, now they've also started, uh, uh, including this political agenda in their movement. And yesterday they announced that this movement is for restoration of monarchy and many other issues that include economic issues as well. Is there an overlap between Nepal as a Hindu Rashtra? Nepal as a Hindu Rashtra and monarchy, is there an overlap, sir? No, Nepal has been a Hindu Rashtra since, 1962, constitutionally. But Nepal was also known for a society with so much social accord and amity. And every religion felt protected. But why people are upset is, not because Nepal has become secular or Nepal has become federal or something, but because nobody knows what federalism means. The secularism has never been debated. All that the European wanted was that, if there is no mention of secularism with the right to conversion as a fundamental right, secularism loses all its meaning. So it has made religion a trading subject. Outsider would not know this much, but here in Nepal there is resentment about this free conversion, and also the fact that the constitution doesn't define what secularism is. How is it different from Hindutva? How is it different from Hindu Nepal? Nobody knows, except that they are demanding this right to conversion as a fundamental right. And Okay. there is resistance at the grassroots level, the people, we are seeing these, ordinary people, their religion bought over, their religion being made a trading subject. Okay. I'm also joined by Mr. Aditya Khanna, political commentator live from Kathmandu. A very warm welcome to you, sir, for joining me. How do you look at this movement? Do you think that this is an expression of people on whom a sort of a foreign model has been imposed? Your first comment, sir, Mr. Khanal. देखिए, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा बिल्कुल बोलिए। क्योंकि सांस्कृतिक रूप से देवनागरी लिपि हमारी दोनों की मातृभाषा है, देवनागरी लिपि, और ज़्यादा लोग ये भाषा समझते हैं। ऐसे भी हम लोग एक मानसिकता से शासित है कि अंग्रेजी बोलना आधुनिकता है और एक उन्नति का प्रतीक है, जो यथार्थ में है नहीं। तो वास्तविक उन्नति और प्रगति उसको माना जाता है अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। रही बात अभी जो ये आंदोलन हो रहा है, ये जो परिघटना आप देख रहे हैं, मूलतः मुझे लगता है कि ये लोगों की जो असंतुष्टि है व्यवस्था के प्रति या सरकार के प्रति, दोनों का निष्कर्ष है। क्योंकि साधारणतः क्या होता है कि क्रांति या आंदोलन तभी होता है जब लोगों में या तो विभेद के कारण से उत्पीड़न होता है या अभाव के कारण से उनमें क्या होता है कि एक संकट होता है। तो यहाँ विभेद की बात नहीं है ना? संविधान में सारी चीज को समेटा गया है। अभी की जो अर्थतंत्र है मूलतः देश की, वो काफी संकटग्रस्त स्थिति में है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। तो जनता जो है, अभी जो युवराज गिमरे जी ने कहा कि जो परिवर्तन हुआ, मतलब कागज तौर पे संविधान जो नया निर्माण हुआ,
गणतंत्र कहा गया, पहले प्रजातंत्र था, फिर लोकतंत्र आया, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो जनता के जीवन में जो एक समृद्धि आनी थी, या राष्ट्र में जो जो संपन्नता, उसको जो प्रधान में रखना चाहिए था, वो दिखा नहीं। हमेशा क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी केवल सत्ता के दौड़ में है, और उस दौड़ में क्या है कि कोलैटरल डैमेज के रूप में केवल जनता ही पीस रही है। तो उस कारण से ये प्राइमरीली जो है, ये फाइनेंशियल जो अभी एक क्राइसिस है, वो प्राइमरी रीजन है सबसे फर्स्ट तो। और सेकंड क्या है कि जो व्यवस्था परिवर्तन होने के बाद जो जनता के जीवन में जो आधारभूत रूपांतरण की जो अपेक्षाएं थी, खनाल साहब, एक वो चीज जैसे पूछना पिताजी। चाहता हूँ, जी। राजा की वापसी और जी। एक देश का चरित्र जो हिंदू राष्ट्र हो, क्या वो एक ही जी। चीज है या दो अलग अलग चीजें हैं? देखिए, ये अपनी अपनी मानसिकता है। अब हिंदू जो राज्य या साम्राज्य की जो परिकल्पना है, वो राजा के बगैर साधारणतः नहीं होती है, लेकिन वो समय के साथ साथ आप उसको जिस राष्ट्र में आप है या जिस भूमि में है आप, उस भूमि की आवश्यकता के हिसाब से आप उसे निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि राजा भी जनता है, और जनता जनता में से अगर कोई भी राष्ट्रपति बनता है, तो भी सेवा के भाव से ही राष्ट्रपति बनता है। लेकिन सबसे मूल बात क्या है कि देश की जो समृद्धता है, और जनता में जो उत्थान, जो राष्ट्र की जो उत्थान है, उसको प्रधान में रखते हुए जो पार्टी ये कार्य करेगी, वही सत्ता में आएगी। और 84 का जो चुनाव है, वो केवल इसी पे केंद्रित रहेगा। पॉलिटिकल पार्टी से सारे लोग आजित हो गए हैं, इसीलिए आज ओके, इतने लोग। जी, जी। okay. Mr. Ghimre, do you think that this is going to be the mainstream of the politics in Nepal, or this is going to be a peripheral thing? Because ultimately, when people vote, you have different issues. So, is it the mainstream, or are we looking at the periphery right now? What happens is issues that may be peripheral now could assume a central role also. Now, as Mr. Khanal said, people are fed up with these political parties and corruption. And like in Nepal, if there is one thing transparent, that is corruption, unfortunately. And as I said, almost all the half a dozen former prime ministers, they are embroiled in one or the other mega corruptions without their being accountable to parliament. One. Two, like you were asking whether monarchy and Hindutva overlaps, but you have to go back to 2006 when Nepal was first declared secular and then monarchy was removed because the people or the external stakeholders at that point of time, they calculated that like Hindutva is a larger Hindu Nepal is a larger umbrella power for the king, so it will be easier and wise for to declare Nepal a secular country first and then remove the monarchy. But unfortunately, in any democracy, Nepalese people were not involved in decision. Nor parliament debated, debated in details about the pros and cons, the consequence of monarchy being removed. Second thing So, is, are we saying, whether Mr. Ghimre, that a liberal democratic constitution had no democratic consensus? It was yes, no democratic constitution. Because let me tell you, out of 308 provisions in the articles in the constitution, not a single amendment was allowed to be moved. Not a single, like article was debated in the full house. Only 7 or 8 leaders, with collaboration with the external agencies, UN, there and maybe Indian authorities, they brought out this constitution, but not a single article was debated in parliament in the whole house. ओके मिस्टर खनाल, जब हम बात करते हैं एक हिंदू राष्ट्र की, हिंदू चरित्र की, हम एक संस्कृति की भी बात करते हैं। आपको लगता है कि ये जो इस तरह से सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो एक कल्चरल असर्शन है, राजनीतिक से ज़्यादा अस्मिता को लेके है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि गणतंत्र क्यों आया, या प्रजातंत्र क्यों आया, लोकतंत्र क्यों आया, कि लोगों के जीवन में एक आर्थिक जो है समृद्धि का रूपांतरण हो, लेकिन कुछ हुआ नहीं, है ना? जैसे अभी युवराज जी ने कहा कि भ्रष्टाचार और स्केल अप हुआ,
और जो करप्शन है वो और ट्रांसपेरेंट हुआ, वो और प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ, है ना? ठीक है, पार्टी के जो टॉप लीडर्स भले कोई इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन पार्टी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण रहा है बहुत सारे पार्टियों का। तो जनता आजित हो गई कि जो दिवा स्वप्न दिखा के हम लोग को गणतंत्र लाया गया, दिखाया गया, उससे कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं। रोज हजारों लोग बाहर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति आ रही है कार्तिकेय जी कि आने वाले चुनाव में लोग वोटिंग टर्नआउट ही 20 से 25% से ज्यादा ना हो, क्योंकि उतने युवा यहाँ रहे ही ना, और 10 से 12% वोट जो लाए वही शायद विजेता हो जाए। ऐसी स्थिति निर्माण हो रही है। अब ये षड्यंत्र है या ये परिस्थिति के कारण हुआ हुआ निर्माण है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि सनातन जो धर्म है, हमेशा से स्वाभाविक रूप से वो समावेशी है, सहिष्णु है और उदार है। तो जिस जिस कारण से इसको परिवर्तन किया गया था, वो कारण अपने आप में ही षड्यंत्र था। इसलिए हिंदू राष्ट्र होगा नहीं होगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सारी पॉलिटिकल पार्टी भले ना हो, लेकिन जो मेजॉरिटी है, वो चाहेंगे तभी ये संभव है। और लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एस्टैब्लिश करेंगी वोटर, जनता। तो सारे चीज़ जनता के हाथ में है। और अभी से ये कहना कि राजतंत्र आएगा, हिंदू राष्ट्र आएगा या नहीं आएगा, इट विल बी टू प्रीमेच्योर। ये थोड़ा-सा परिपक्व हो जाएगा आज के समय में।